the session? Done, sir. Okay. So guys, I wanted to take some time, maybe 15-20 minutes, to align everybody on how goal setting is to be done. So I have done extensive research and talked to experts and read various books as well. And I've come up with a template going forward how we want to align everybody in the company onto our goals. So the first rollout, I sent this out to you, to Supriya, to Karan, to Supriya, and to Shams as well. But the result I got back was something different to what I was expecting, and I thought, and this is not only from one person, I got different things from all three of you. So I thought it's better that we go through a session on what we are expecting out of this goal setting exercise. So I've got in front of me the template that I shared with you, with all of you. And the concept starts with 12-week, not 12-week, yearly goal. The concept starts, no, come back to the yearly goals. Come back, yeah, okay. The concept starts with a yearly goal. And obviously this is not the sheet that I had emailed you. Is this the sheet, Supriya, that I had emailed? Yes sir, ये शीट यही है, लेकिन यहाँ पे 12 वीक्स की जगह पे 1 ईयर का प्लान होगा, एंड दिस इज द वीकली गोल्स. बट सेम चीज ईयरली गोल्स में भी मेंशन की है. So where did I send you a template for the yearly goals? No sir. Okay, never mind. Concept remains the same. सबसे पहले हमारी पूरी कंपनी के लिए yearly goal define हो गए, and from that yearly goal we will come up with quarterly goals. So we will break up. So for example, if you want to do hypothetically 100 rupees order book in a year, now based on that 100 rupee order book in the year, what do you think we need to achieve in the first quarter will come in the 12-week goal for the first quarter under item number 1. And then that 100 rupees, who is the owner of that 100 rupees? It's the sales department. So it will be the name of the owner in front of that OB, and उनके लिए जो problem solver है वो कौन है, that will be mentioned over there. So similarly, what we will do is we will create a yearly goal for the company first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maximum 7, not more than that. जो भी सबसे important goals हैं company के, and then उन goals के base पे हमने पहले quarter में क्या achieve करना है, वो goals यहाँ पे लिखे जाएंगे जो 12-week goal. So for example, this is a quarter 4 2019 sample 12-week goal. So order book के आगे आप लिखेंगे कि इस quarter का क्या order book का goal है, इस क्वार्टर का उसके नीचे लिखेंगे क्या सेल्स बुक का गोल है. And then apart from these two are standard. Apart from this, then you may have 3-4 other goals which are outside of OB and SB. Just as an example, I had mentioned of my own top of my head, this is not discussed with anyone of you guys, but I had put that 3, 4, 5 and 6. So these are the kind of goals that need to be put here, and the owner name in front of it. And अगर owner को कोई issue है, who should he talk to if these goals are to be met or even not met? Are we clear till now? It's a very simple exercise. Any questions on this part of it? कि company के goals क्या हैं, पहले वो listing होगी. Karan, any clarity needed?
नहीं, Shams, any clarity needed on this? नहीं, ये तो क्लियर है, वो तो ऑलरेडी हमने इसी बेस पे हमने वो बना भी रखा है। नहीं बना के रखा है ना, we'll go to that. ठीक है। Next, what we do is we take goal number 1 and we put it in this line. So goal number 1 OB, whatever it is, say it's 100 rupees, और उसका owner is RC/RK. Now inside this column we will go into detail. First we will list out RC. RC के goals क्या क्या हैं और RK के goals क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिस्ट होंगे, और उसके आगे we have to have two types of indicators. One is called a lead indicator and one is called a lag indicator. Does anybody know what a lead and lag indicator is? Okay. A lead indicator is something that if you are doing every week and every month and every quarter, it will lead you to your goal. It is leading you to that goal. For example, if you have to hit OB of a certain amount, you have to put in tenders under evaluation of a certain amount. For example, that becomes your lead indicator कि अगर मेरे पास टेंडर 1000 रुपए की टेंडर ओपनिंग होगी इस क्वार्टर में, तो ही जाके 100 रुपए का ओबी होएगा इस क्वार्टर में. दैट इज कॉल्ड लीड इंडिकेटर. वो आपको पहले ही दिखा देगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो नहीं. अ लैग इंडिकेटर इज आज की डेट में आपकी अगर सेल क्या ओबी क्या है, दैट इज लुकिंग बैकवर्ड्स. लैग इंडिकेटर इज लुकिंग बैकवर्ड्स. लीड इंडिकेटर इज लुकिंग फॉरवर्ड. So for example, if somebody is one of these tools target is follow up file weekly up to ADG and raise a red flag, for example, अगर वो, so this is a lead indicator कि अगर ये आप काम वीकली कर रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो. Any questions about lead and lag? नहीं, वो क्लियर है, लीड एंड लैग क्लियर है. ठीक है. सो जो आपका ओबी का गोल है, उस ओबी के गोल के अंदर तो जितने आपने शैम्स आई कैन से टू योर दिस थिंग, जितने आपने ओबी के वो लिखे हुए हैं, टेंडर्स लिखे हुए हैं अपनी डिटेल में, क्वार्टरली डिटेल में आपने टेंडर बैकअप दिया है ना सबका, दोज आर ऑल लैग इंडिकेटर्स. मतलब वो आपको जब काम हो जाएगा तो पीछे दिखाएंगे मेरा इतना क्लोजर हुआ है ओबी का. But there is no lead indicator in that. Lead indicator is missing in that sheet जो आपने प्रिपेयर किया. नहीं, वो जो सेल बुकिंग में आएगा ना, ऑर्डर बुकिंग तो आप वो टेंडर डाल रहे हो आप. ऑर्डर बुकिंग इज अ लैग इंडिकेटर. नहीं, और देखो अच्छा है कि ऑर्डर बुकिंग में वी आर डिसाइडिंग टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर एंड वी विल बिड. ओके. अभी तो अभी उसका कन्वर्जन नहीं हुआ ना सेल में. हाँ, तो आपने टारगेट जो बांधा है, आप इसकी गोल नंबर 1 को कैसे मेजर करोगे? दो तरीके से कर सकते हैं. एक लीड इंडिकेटर, एक लैग इंडिकेटर, एंड वी नीड टू हैव बोथ. If you are having 6 indicators, 3 of them should be lead and 3 of them should be lag. But I am not seeing any lag indicator, any lead indicator in your goal. All of them are lag. That means जब वो conclude होगा तो आपको पता लगेगा कि मैंने गोल हिट किया या नहीं हिट किया. But there is no lead indicator leading you to that goal. No. आप टेंडर डाल रहे हो. नहीं, आप टेंडर डाल रहे हो. आप टेंडर डालने के लिए आप जो है ये कर सकते हो कि टेंडर डल जाएगा, लेकिन टेंडर वो आप जीतोगे हारोगे वो तो आपको बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद आएगा. Yeah, but there are set of actions that you must take. नहीं, सेटअप एक्शन for that goal to happen. No, look. ऐसा है कि वो प्री टेंडर फॉलो अप से लेकर के टेंडर सबमिशन वो सारा जो है ऑलरेडी वो डिफाइन है
लेकिन आप टेंडर प्राइस बीट पे जीतोगे या वो नहीं जीतोगे, आप कितना भी टेंडर फॉलो अप कर ले, लेकिन अगर प्राइस आपका वो सही नहीं है तो आप टेंडर हार जाओगे। I'm So correct? what lead indicator is what action is in your hand. ठीक है, It is not L1, L2 is not in your hand. एग्जैक्टली। We तो are आप talking यदि about a lead indicator. For example, tower project follow file weekly with ADG. उसमें कोई if and doubt है कि वो किसी आप किसके हाथ में है वो? नहीं देखिए, यहाँ पे एक हमारे हाथ डाउट में। है जो मैं ना, देखिए हम जो बड़े आराम से ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि एडीजी, ठीक है, आपको मैं बहुत क्लियरिटी के साथ, अगर और मेरे हिसाब से आई होप दोनों आदमी एग्री भी होंगे उससे, हर इंफॉर्मेशन एडीजी आपको सही नहीं देता है, ठीक है, और ना मिल सकता है। मैं एडीजी उसमें की होना बात नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ there is a set of actions that you can do which will lead you to that goal. ठीक है, Define that set of actions here so that your team is knowing that ये मैंने action करने हैं, so that if I do it my chances of reaching that goal will become better. यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि हर एक टेंडर का जो है उसको डिफाइन करके दे दूं और उसको बोलूं कि उतना ही वो फॉलो करे, करेक्ट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, इनकरेक्ट। मैंने बोला आप डिफाइन कीजिए कि उसने क्या क्या एक्शन करने हैं so that his chances of closing that deal in that quarter become higher. Specify that. थीसिस लिखना पड़ेगा सर, बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, थीसिस लिखना पड़ेगा, यानी कि वो मैं अपने बंदों से जितना एक्सपेक्टेशन करता हूं, अगर उतने को मैं लिखने लगूंगा ना, अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो गलत काम, अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। हमको आप ये गोल देखो, आपकी गोल सेटिंग और मैंने 5 गोल यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, आप देखो यहाँ पे थीसिस नहीं लिखी मैंने। नहीं देखिए ऐसा है कि अगर आपने बस एक लाइन में देखिए, मैंने अपने बंदों को जो मैंने वो दिया है मेरे हिसाब से और मेरे बंदों के हिसाब से बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मेरे भी माइंड में वही है जो वो मेरे बंदों के माइंड में है, ठीक है। आप उसको किस फॉर्मेट, देखिए किस फॉर्मेट में लिखते वो अलग चीजें हैं, लेकिन मैंने जो डिफाइन किए हैं अपने लिए गोल, अपने बंदों के लिए, आई थिंक वो क्रिस्टल क्लियर है वो। अब ये है कि इसको फॉर्मेट में देखिए अभी बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, इट्स मैटर ऑफ फॉर्मेटिंग की जो है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। No, it's not. Again, let me repeat. नहीं वो करण जी नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं कि करण जी का ये व्यू लिया जाए कि उनका क्या सोचना है। First, let me address your question because if you are on the wrong path, then I don't want to leave you and start on another topic. I want to first correct your path before I move to the next, because there may be learning on this for Karan ji as well. Understood. Got your point. So I am not saying that what you have done is wrong. I am saying what you have done is only showing the lag indicators. It is not showing the lead indicators. Okay. So I want you to put in the lead indicators there. Like and compress. Understood. मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि लाइक सपोज कीजिए कि मैंने उसमें एक्स टेंडर जो भी लग रखा है वो कंसोल का हाइपोथेटिकल, हाँ जी, तो यू वांट टू नो कि जो है जब मैं इसको डिफाइन करूँ गोल 1 में, तो आई नीड टू लाइक वो पुट द वो कंसोल और उसमें क्या क्या प्रोसेस उनको करना मैं उतना लिखूं, करेक्ट? Yes. What you are expecting him to do. For example, let me give you a small example on point number 6 जो मैंने लिखा है यहाँ पे। कंपनी का गोल मैंने लिखा है that I would like the company to build a 1 year, 3 year, 5 year vision. Okay. Now a lag indicator to this is a simple check mark कि ये हुआ या नहीं हुआ at the end of the quarter, right? ठीक है. That is a lag indicator that is telling you as a checkpoint at the end of the quarter ये हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, understood. अब इसका लीड इंडिकेटर अगर मैंने बनाना है तो इसका लीड इंडिकेटर होगा एक पॉइंट, डिस्कस वीकली विद हमीद जी फॉर 30 minutes on this topic on one-on-one meeting. ठीक है. And if you do it week 1, week 2, week 3, week 4, I am guaranteeing you will hit this goal before the quarter is finished. ठीक है. That is called a lead indicator. You are defining the action that needs to be taken by you
Mhm. with your problem solver Mhm. weekly to be able to hit that goal. अब जरा मुझे एक चीज बताइए 2 मिनट. I have another question. Let's Like first understand the lead. Any नहीं नहीं questions on what is नहीं a lead indicator? वो मेरा अंडरस्टूड है. मेरा So बस we are एक going to measure two things. We are measuring your final outcome. वो हमारे को तभी पता चलेगा जब क्वार्टर खत्म होएगा. ठीक है, exactly. And we are also measuring during the course of the quarter what action must be taken by that person who is the owner that will help him. नहीं वो क्लियर है. मैं एक चीज इसमें वो जानना चाह रहा हूँ. सपोज कीजिए कि ऑर्डर बुकिंग में मैंने अगर 5 टेंडर या 7 टेंडर डाले हैं, तो उस 7 टेंडर का जो हमारे हैंड में है उसका क्या प्रोसेस होगा उसको मैं डिफाइन कर दूं. करेक्ट. एक लाइन में. I'm not saying process. वो क्या एक्शन होगा. For example, you can hypothetically say that उसने जाके ADG के साथ लंच करना है या चाय पीनी है हफ्ते में 2 बारी. ठीक है. और थर्सडेज और ट्यूसडेज और थर्सडेज को जाके चाय पीनी है उसने. वो उसका हो गया लैग इंडिकेटर, क्योंकि उससे उसकी रिलेशनशिप बढ़नी ही, जितना फेस टाइम ज्यादा है उतनी रिलेशनशिप बढ़नी है. बिल्कुल बिल्कुल. और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेस ऑफ दिस ओबी. जितना ज्यादा मिलेगा उतना इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना हम रिएक्ट पॉजिटिवली कर सकते हैं उससे. एग्जैक्टली. सो दैट इज कॉल्ड अ लीड इंडिकेटर. So more important than setting your goal at the end, क्या चाहिए, वो तो फाइनल आउटकम आपका जो है सो है, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो. More important than lag is actually lead indicator. Does that answer your question? नहीं, क्लियर है. Now let's move to Karan. Any question on the company goals coming first for the year, and based on the yearly goal, you define your quarterly goal. मतलब there is a linkage, clear linkage between yearly comes first, and then quarterly, कि इस quarter में क्या करना है मेरे को to hit my yearly goal. Any questions on that concept? So the question is that both of them are goals. The yearly goal is also end result, but measured at the end of the year. Yes. It is maybe what you call a lag indicator. Yes. And the quarterly goal is also the end goal. That yes. if you get at the end of the quarter by quarter, you will reach your yearly goal. That's right. That is what I understand with goal. Yes. The lead indicator is a simple project. Hold on. You don't define your goals. You take your yearly goal and you say that I need to achieve this in the first quarter in order to get to the yearly goal. What I need to achieve in the first quarter. At the end of the first quarter, you define, okay, I have already achieved so much. Maybe it's less, maybe it's more than what I had said. And you redefine your goal for quarter 2 so that it aligns itself to your yearly goal. So where I see a personal disconnect is until you align all 4 quarters, you will not be able to see a path from Q1 or from beginning of Q1 to end of Q4. I agree that when you are there at the end of quarter 1, you need to realign your goals because there will be shifts. There will be shifts. Depending on the shifts, you either focus on something more or less, and then carry on. That's right. But a blueprint must be there that defines like I said, maybe a simple chain to get from beginning of quarter 1. You have to ensure that every quarter adds to your end Q4 goal. So anyway, that's something that I'm thinking of this. But I understand what a goal is, yearly goal, and I understand what a quarterly goal also is. Right. So in addition to first quarter goal, if you have the bandwidth to join the dot first, second, third, fourth, please do it. I'm not stopping you. But I need
the yearly goal to be done at the beginning of the year, and I need the first quarter goal to be done also in the beginning of the year. Right. And after that, if you have the bandwidth, do it for year 2, and if you have the vision, do it for quarter 2, 3, 4 also. Right. Which in any case you'll have to redefine. But if you want to do the double effort on that, no problem. I have absolutely Right. no problem. Right. You can do it again once in the beginning for all 4 quarters, and again do it every quarter. Correct. But it'll just take more time, but fine. If it gives you more clarity, why not? Right. Okay? Yes. So goals Let's come- I'm clear about, but we have not yet gone on the lead and lag indicator. We've only So defined the goals. let's come to the next stage. Is when you're expanding goal 1 and goal 2 and goal 3 into both lead and lag indicators. Correct. And as per the researchers and the experts, the lead tasks are more important, much more important than the lag task, because you have control on the lead, but you do not have control on the lag. For example, Yeah. if you have an OB of 100 rupees, you don't have control of that 100 rupees. Right. अगर है तो होएगा, नहीं है तो नहीं होगा, वो तो वैसे ही पता चल जाना है आपको. That is not rocket science. Yes. So I have understood when you explained to Shams के lead indicator or lag indicator क्या है. In simple layman terms, a lead indicator is your project plan to get to the goal, followed by the lag indicator. This is what my Actions. What actions you One, take? actions. Your step-by-step milestones that you need to take, tasks that you need to complete in order to get to your goal and further your lag indicator. So I think of it as a project plan that we do on a weekly basis. The end result is delivery of a product and money in your bank. And there are a series of steps that you take, from order placement to shipment to delivery to OEM follow-ups, packaging, blah, blah, blah. That is my interpretation. Now, Shams has raised a valid question कि ये अगर मैं करते रहूं हर प्रोजेक्ट का तो पोथा बन जाएगा, राइट? उसमें आपने क्या करना है? हमने पोथा बनाना नहीं है सबसे पहले. Correct. और जितना पोथा बनाओगे उतनी कंफ्यूजन ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात है. Right. हमने 80-20 रूल अप्लाई करना है. हर एक प्रोजेक्ट का अगर आपके पास निकलते हैं 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो उसने करने हैं, उसमें से आप 80-20 कर लो. उसमें से जो 20% टास्क which will give you 80% of the result, सिर्फ वही 2 या 1 या 2 वो इम्पोर्ट रखो, बाकी हटा दो. Okay. So that way आपका पोथा नहीं बनेगा. ये ठीक है. पोथा बनेगा प्रोसेस में, बट इधर आएगा सिर्फ 1 या 2 लीड इंडिकेटर्स. Okay. एंड आई एम हैप्पी अगर आपका लीड इंडिकेटर का पोथा बन जाए. लैग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू मी, बिकॉज लैग के बारे में जब पहुंचेगा तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाता उसके बारे में. अभी हमारा अभी हमने सब वी सॉ दिस प्रोजेक्ट्स ऑफ 31st मार्च, इतना बड़ा बना के हमने प्लान बनाया हुआ था, हुआ उसका आधा. तो वो तो हमारे को पता ही है क्या होने वाला, उसकी वैल्यू ही नहीं है कोई. वो तो वैल्यू है, ठीक है, डिस्कशन पॉइंट है. हमने 100 टारगेट किया था, उसमें से 50 हुआ, चलो ठीक है, आगे 100 अटेम्प्ट करते हैं बस. Right. और उसमें कुछ दम ही नहीं है, उस लैग इंडिकेटर में कोई दम नहीं है. So इधर मेरा क्वेश्चन ये है, the way you made a format, you put in owner is 2 people. Normally हम एक ही बंदे को एक जॉब देते हैं. नहीं, in this what is going to happen, your OB is owned by 2 people because I've got 2 different salesmen looking into 2 different projects. So in this, RC will have his own lead and lag indicator, and Correct. RK will have his own, or they may be the same because they are addressing the same customer. It could be the same. But it can be broken down project by project. I mean, for example, my quarterly result is for the commercial bid to open of HEVC. This is my main focus. That's right. In this quarter. In this quarter. Yes. But that is my end result, or you could say it is my lag indicator that I am L1. That is your goal number 1, for example. Correct.
So, And that is Raj also your lag, and that is also your lag indicator. correct. And Raj is leading that project. But I need you to define for Raj what is his lead indicators to. So the goal is the North Star, Yes. and your lead is your compass Yes. for reaching the North Star. Yes. कि तो इस दिशा में जाएगा और ये करते रहेगा, चप्पू मारते रहेगा, हर 2 घंटे में तो चप्पू लगाते रहे तो नॉर्थ स्टार पहुंचेगा तो. Right. Okay. Supriya, you have any questions on the goal setting process? No, sir. It's clear for you what is the system of goal setting? Yes, sir. Okay. So any further clarification required, or you guys can carry on and do this league and lag indicators and the company goals. So Shams, I have, if you can just pull up the goals shared by Shams with his team, Supriya. Yes, sir. I will take a live example and show you इसमें क्या-क्या चीज missing है. So let's put over here, यहाँ पे Sir, actually, PC is not responding well. Actually, this is hanging. Okay, what I remember, Shams, is number one, our yearly goals are not clearly listed. Or whatever the 4, 5, 6 yearly goals you have defined. I did not see that. I only saw that you have jumped straight into individual goals of staff. No, yearly भी हमने वो कर रखा है मैंने. तो दिखाइए for the company. हाँ, मैंने क्या किया है कि ईयरली में मैंने हर बंदे का ईयरली जो मैंने डिफाइन कर दिया. नहीं, वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं कंपनी का चाह रहा हूँ. मैं आदमी का तो नीचे आएगा जाके. आके ये यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो है कंपनी का जो भी 8 या 10 वो गोल हो उसको मैं कर दूं, फिर उसको अपना अंडरस्टूड. यस, सो सबसे पहले कंपनी का ईयरली गोल डिफाइन होगा, उसके बेस पे कंपनी का क्वार्टरली गोल डिफाइन होगा, और उसके बेस पे कंपनी का गोल एक एक करके अलग लोगों में बाइफर्केशन होगी, और अलग अलग लोगों के गोल के नीचे लीड और लैग इंडिकेटर डिफाइन करे जाएंगे. ठीक है, यानी कि वो मेरे वाले अगर सुप्रिया अगर ओपन कर ले वो तो ठीक रहेगा. हाँ सर, ओपन हो रहा है. आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, मुझे दिख रही है. सो अगर मैं इसमें जाऊं तो ये 12 मंथ गोल आपने अलग जितना स्टाफ मेंबर है अलग कर दिया है. एग्जैक्टली. बट जो कंपनी का मेन गोल है, 5-6 गोल्स हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी का एसबी और ओबी कहां से आएगा? सुप्रिया समझाइए, जो मैंने दोपहर में आपसे बात हो रही थी. सर, जैसे कि सर का बोलना है कि हमने जो रौनक का और राहुल कंडारी का अलग अलग करके दिखाया है, तो कंपनी गोल में टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स बुकिंग अमाउंट एंड टोटल ऑर्डर बुकिंग अमाउंट वो कंपनी के गोल में आ जाएगा. आई गॉट पॉइंट.
और जो आप इसके नीचे डिफाइन कर रहे हैं ये आपका लीड और लैग इंडिकेटर आएगा यहाँ पे, जो आपने ये 7-8 पॉइंट लिखे हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये किसका है, सबसे पहले रौनक का है, राइट। रौनक का नंबर 1 पॉइंट इज अ लैग इंडिकेटर, राइट। नंबर 2 is his lead indicator, and this is also a lag, क्योंकि ये क्वार्टर के एंड में देखेगा आपने 15 किए कि नहीं किए। Exactly. So this 15 needs to be divided into, okay, month 1 5, month 2 5, month 3 5. Exactly. That becomes a lead indicator. This is right now not a lead indicator. ये आपको 31 मार्च का सिर्फ बता रहा है क्या चाहिए मेरे को। इसको टर्न करके आप ये भी लिख सकते हैं कि तेरा टारगेट है हर महीने मेरे को 5 नए टेंडर चाहिए, ठीक है, जमा होने का। ठीक आई है। वुड से वो भी मंथ का लैग इंडिकेटर होगा, क्वार्टर का नहीं, so we want to no, so it's a quarter's lead indicator but a month's lag indicator. उल्टा, Quarters लैग इंडिकेटर के 5 टेंडर सबमिट हो जाने चाहिए। एंड अगर मंथली आप स्प्लिट करोगे तो मंथली आएगा, आपको फनल बनाना है 10 टेंडर्स का, जिसमें से आपकी शॉर्टलिस्ट हो जानी चाहिए और बिडिंग अंडर प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, उसके 5 टेंडर। yes. Now let's put like simple thing as number 4. Now ये भी आपका लैग इंडिकेटर है, बिकॉज ये आपका क्वार्टर एंड की बात कर रहा है। इसको अगर हम सेम चेंज कर दें और बोले कि मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर MIS 20% माइनस फॉर द वीक, एवरी वीक, तो वो आपका लीड इंडिकेटर बन जाएगा। Do you see the difference between lead and lag? मैं समझ रहा हूँ। लीड इंडिकेटर में उसकी आंख हर हफ्ते लगेगी उसके ऊपर, बट लैग इंडिकेटर में क्वार्टर के एंड पे आंख लगेगी उसकी। So out of 1 to 7, our lead indicators are more important than lag indicators. But So that is one thing. And second thing is यहाँ पे company goals missing है। ठीक है? ठीक है, वो मैं कर दूंगा। Yeah. Maybe what you could do, चलो आप करो। ठीक है? ठीक है, फाइन। ठीक है।